हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ हर कार कुछ कहता है। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं यील्ड कर्व के बारे में, विच इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट कर्व, जिसको समझना एज ए बॉन्ड मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्लोबल मैक्रो पिक्चर समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये यील्ड कर्व। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पे आप, दिस इज माय चैनल यूट्यूब में, आप ऑलरेडी जानते होंगे, मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, एंड उसमें एक प्लेलिस्ट है हर कार कुछ कहता है। हाय। सो इस प्लेलिस्ट के अंदर कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किया व्हाट इज यील्ड कर्व, देन व्हाट इज इंडियन यील्ड कर्व हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट किए, देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इन्वर्टेड वर्सेस नॉर्मल यील्ड कर्व, और एक हम लोग एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी देखे करंट यील्ड कर्व वर्सेस कोविड-19 यील्ड कर्व। और जब हम लोग यील्ड कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी लार्जली वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस यील्ड कर्व। सो विद दिस, आज जो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है बेसिकली यील्ड कर्व का फ्लैटनिंग वर्सेस स्टीपनिंग को समझना। व्हाट इज द फ्लैटनिंग ऑफ द यील्ड कर्व, और व्हाट इज कॉल्ड द स्टीपनिंग ऑफ द यील्ड कर्व। तो ये जो यील्ड कर्व है, दिस इज ब्रॉडली अप्रोक्सीमेटली, ये पुराना डेटा है जो हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट किए थे, यूएस इंटरेस्ट रेट कर्व। तो इसको हम लोग एक अप्रोक्सीमेट डेटा से चेंज करेंगे। 4% इज द 3 मंथ इंटरेस्ट रेट, देन वी हैव 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 एंड 5.34। तो ये जो यील्ड कर्व है, दिस इज बेसिकली नॉर्मल यील्ड कर्व, क्योंकि ये ओवरऑल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर ज्यादा होना चाहिए। इफ हम लोग लॉन्गर टेन्योर के लिए बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो कॉम्पेंसेशन के लिए जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है, दैट शुड बी हायर। दिस इज कॉल्ड द टर्म प्रीमियम। तो जब टर्म प्रीमिया इज पॉजिटिव, देन वी कैन से दिस इज आवर नॉर्मल यील्ड कर्व। द गैप डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली द वेरियस फैक्टर, देयर इज इन्फ्लेशन, देयर इज जीडीपी ग्रोथ कैसा है, ओवरऑल लेवल ऑफ एक्सेलरेशन और डिसइंफ्लेशन अलोंग विद द टर्म प्रीमियम। सो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है जो लॉन्ग टर्म यील्ड को अफेक्ट करते हैं। एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, दिस रिमेन्स फेडरल रिजर्व या जो भी सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके साथ वेरी क्लोजली लिंक्ड। अब अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि ये जो यील्ड कर्व है इसमें फेडरल रिजर्व स्टार्ट्स टू, या फेडरल रिजर्व, क्योंकि यूएस यील्ड कर्व देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। सो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया 4.5, एंड दिस वेंट अप 4.7, this went up 4.9, this is 5.1, this is 5.2, this is 5.25। मतलब लॉन्गर एंड में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज फेडरल रिजर्व इज कंट्रोलिंग द शॉर्टर एंड ऑफ द कार। तो ये जो फिनोमेना अभी हम लोग नोटिस किए, नॉर्मल से ट्रांसफर होना, जिसको बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द यील्ड कार। तो चलिए हम लोग और डेटा देखते हैं। तो ये और एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, एंड फेड रेट बिकेम 4.8, दिस वेंट टू 5, this went to 5.2, this went to 5.25, this is 5.34, 5.44, 5.5 and 5.55। तो ये हो गया ये फर्दर फ्लैटनिंग ऑफ द यील्ड कर्व। Of Federal Reserve increase, suppose interest rate to 6, then the lower rates becomes 5.8,
then suppose 5.7, 5.5, 5.3, 5.1, 5 and 4.9। तो ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की वजह से अब जो कार बन चुका है दैट इज एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व। ये जो जर्नी यील्ड कर्व ने तय किया, दिस जर्नी दैट इट मूव फ्रॉम दिस वे टू दिस इज कॉल्ड द फ्लैटनिंग ऑफ द यील्ड कर्व। एंड इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है इज द स्टीपनिंग ऑफ द यील्ड कर्व व्हेन द सेंट्रल बैंक इज कटिंग इंटरेस्ट रेट। Like COVID के टाइम जो हुआ, suddenly if they starts cutting the interest rate, the inverted जो yield curve था, that curve is suddenly becoming normalized, and the inversion and the flattening of the yield curve से अभी immediately जो हम लोग देखे curve ऐसे था and it became like this is called steepening of the yield curve। So I hope आप clearly समझ पाए what is flattening and what is the steepening of the yield curve। तो इस मामले में हम लोग फिर से यहाँ पे जाएंगे और जो डेट डालेंगे that is 22nd of February 2020. If not, we'll go by 2020 and February and 21st February 2020. So this was the curve. This was broadly the curve। और suppose इसको और आगे लेके चलते हैं। ये जो हो रहा है, this is front end going up, this is the flattening of the yield curve is happening। ना उसके बाद फेडरल रिजर्व ने जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट किया, वी कैन सी आफ्टर मार्च द इंटरेस्ट रेट कर्व बिकेम नॉर्मल एंड दिस इज अ नॉर्मल यील्ड कर्व। एंड नाउ लेट्स गो टू 2022। दिस इज द कर्व। नाउ फेडरल रिजर्व इज increasing the interest rate, front end is going up, फ्रंट एंड वेंट अप। ये जो प्रोसेस में ये वेंट अप किया, दिस इज कॉल्ड द फ्लैटनिंग ऑफ द यील्ड कर्व। सो ये जो फ्लैटनिंग, ये जो स्टीपनिंग, दीज ये बहुत कुछ हमको बताता है रिगार्डिंग द ग्लोबल मार्केट, मार्केट के हेल्थ के बारे में। सो अगर आप मेरे से ये सब और भी जानना चाहेंगे, आप मेरे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज ईलान मार्केट्स। इफ यू गो टू type my name is double A and you'll find masterclass on advanced commodity and currency where we talk about global market, global opportunities with of course currency commodity opportunities, how to trade in the Indian market। So अगर आप चाहेंगे further knowledge on this और further discussion और मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, this is one of the way to get in touch with me। So all the best from my side for your trading and investing journey, and happy trading।